भाई अब आया हूँ मैं क्रूज़ के लिए। मैं उतरा हूँ वेस्टमिंस्टर वाला जो स्टॉप है ना, वहाँ उतरा हूँ। बस अब ना ऐसे लेंगे क्रूज़ का टिकट नहीं मिला, ठीक है ना। लंदन आई का मिल गया, 4:30 का स्लॉट है। तो अब चलते हैं क्रूज़ काउंटी हॉल। टिकट आप यहाँ से ले सकते हो, नाइट टिकट ऑफिस यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये है इसका, तो बस टिकट है ऑलरेडी। और क्रूज़ कहाँ से मिलेगा? भाई भीड़ देखो इसकी यार, भाई सारी लाइन। ये देखो भाई गेट नंबर 4 पे जाओ, वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। तो ये क्या ना, पहले क्रूज़ कर लेते हैं। यार यहाँ टाइम लगने वाला है, लंदन आई में बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ में कहा से घंटा 2 घंटा लग जाएगा खड़े खड़े में। तो पहले क्रूज़ कर लेते हैं, फिर ब्रिज देख लेंगे और फिर वापस आके फिर देखते हैं गेट नंबर 3, 4 जो भी है। लगवाने वाला नहीं है, ये लोग वेट ही कर रहे हैं। वैसे टिकट स्कैन किया हो गया, नंबर 4 पे वेट करने के लिए बोला है। सब कुछ बारकोड वाला सीन है यार। खैर ठीक है, पेपर कैरी नहीं करना पड़ता। हाँ भाई हो गया क्रूज़ में एंट्री, जाने लग रहे हैं क्रूज़। Through that way if you want to go up, guys. Okay, thank you. Which has self-cleansing properties. But I've got a good fact for you about this bridge. It remains the only bridge in London to have been built on time and under budget. So well done, lady. Then it will turn and we'll experience an ebb tide, what we call an ebb tide, where water flows out of the river into the North Sea, which is ahead of us. For about 7 hours we experience an ebb tide. So there's 2 tides a day. The bridge ahead of us is the Blackfriars Road Bridge,
and on a high tide we struggle to get under this bridge. So you'll see as we go under the bridge what a difference there is between high and low water. But you can also see it on the walls, on the embankment roof. That's a replica to Shakespeare's Globe Theatre, built in the same style as the playhouse of his time. And any performance at Shakespeare's Globe there is done in the traditional style today, so it wouldn't have any lights or sound effects, for example. But you can find really cheap tickets for shows at the Globe. Sometimes they sell tickets for as little as £5 or £10 online. Now, to see a live show in London, that's very good, so it's worth seeing what's available and what's possible. Road bridge here, which is thought to be the quietest bridge in London, due to being very hard to find this bridge. Some one-way streets that lead to it, so anyone you see walking across, you might want to give them a wave because they're probably a bit lost. Now, if anyone's looking for somewhere to go for a drink this afternoon or this evening, a really good place for you on the right-hand side. There's a pub called the Anchor, the one with the red windows there, and the lights outside. It's a lovely pub, this. It's one of the oldest on the Thames. It's been a tavern there for over 100 years. There's a lot of history about it. It is actually thought that Shakespeare's actors used to change in there before they give performances at the old Rose and Globe theatres. It's also where you'll find me, the captain, this evening at about 8 o'clock. That is purely for research purposes, of course, for these guys. We don't have to do our research. Sometimes we do so much research there that we forget the next day what we researched the night before. Have to go again. Some good examples of some of the old warehouses that used to line the riverbanks on your right here. At the height of trade on the river. On your right hand side here is HMS Belfast, built in the same shipyard as the Titanic. First saw action in the Second World War, later went on to become the flagship for the United Nations. It's actually a museum today, so well worth a visit. Now on the left hand side, that's our stop there, that's Tower Pier, folks. But we'll go a bit further, we'll get you nice and close to Tower Bridge, so you get a really good photo opportunity at the moment of the bridge. But still on your left hand side you'll see the Tower of London now. There's a lot of history in the Tower of London. The centre part of the full turrets is the oldest part there, dating back to the time of William the Conqueror. And most famous of course for being a place of imprisonment, torture and execution. On the left-hand side, the Tower of London. We'll get another good view as we swing around in the river. But as promised, we'll get you nice and close to Tower Bridge. This is your stop. Okay, big bus tickets are just one way on the river, and you collect your bus at the top of the hill. We had some people on yesterday with their bus tickets. They went down to Greenwich and ended up getting charged extra because this is your stop if you are a big bus ticket holder. Just a final word, folks, about the commentary. We're not tour guides, as I said earlier on these boats. We're members of the crew. We do these guides voluntarily to try to improve your experience of the journey. We don't put a price on the ticket. It would be fair as we've also got a VHF radio on board this boat. It allows us to communicate with all the boats you see on the river today, as well as the Port of London authorities and emergency services. In the highly unlikely case of an emergency, just remain calm, remain seated and listen to your crew's instructions. We're trained and licensed to be out here, so you're in very safe hands, alright? That hasn't alarmed anyone though. The good news for you is downstairs we do have a fully licensed bar, which will help calm any nerves. Now one thing we like to do on this boat is provide a bit of a live commentary. So we'll play a commentary. Word of warning though, we're not
tour guides on these boats. We are members of the crew. So bearing that in mind, if I get anything wrong, keep it to yourself. Very embarrassing. पूरा एक राउंड, हाफ एक राउंड उन्होंने एक लगवा दिया। अब बस यहाँ से मैं उतरूँगा और दोबारा लूँगा मैं अपनी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, और यहाँ से अब मैं जाऊँगा बंकिमगढ़ पैलेस। तो चलो चलते हैं यहाँ से और पकड़ते हैं अपनी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। यार हॉप ऑन हॉप बस का क्या सीन है ना, हर 10-15 मिनट से ये एक पर्टिकुलर स्टॉप पे आ जाती है। आप अगर हॉप ऑन हॉप बस यूज़ कर रहे हो तो इसके ऐप डाउनलोड कर लो, तो आप लोकेशन वाइज आपको ये दिखाता रहेगा कि अगला स्टॉप कहाँ है और कितनी देर में आपकी बस आने वाली है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो फाइनली मैंने अपनी नेक्स्ट बस ले ली और अब अगला स्टॉप है बकिंघम पैलेस। यहाँ पे मैं उतरूँगा और बकिंघम पैलेस को एक्सप्लोर करके मैं फिर दूसरी बस पकड़ के सिटी के अंदर आ जाऊँगा। ये मेरा लास्ट स्टॉप है, बाकी मैंने राउंड पूरा ले चुका। अगर आप लंदन में हैं तो यार इस चीज़ को मिस मत कीजिए, बहुत शानदार है। आप हर स्टॉप उतर कर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और दोबारा हॉप ऑन लेके आप नेक्स्ट स्टॉप पे जा सकते हैं। तो एक दिन के अंदर आप काफ़ी कुछ लंदन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो आ गया कल। तो ये है बकिंघम पैलेस। तो मैं पहुंचा बकिंघम पैलेस। देखो यार, देखो तब दिमाग खराब हो जाएगा। भाई ये है बकिंघम पैलेस, देख क्या लो यार, मतलब इतनी सॉलिड वाली भीड़ है, ऐसा लगा चलिए यार लंगर लग रखा हो। हला भीड़ देख के दिमाग खराब हो जाएगा। ये है पूरा तो भाई ये देख लो बकिंघम।
ऑप्शन भी नहीं है। तो हाँ, ये देखो दूर से अच्छा आ रहा है ना। ऐसे चल रहे हैं। ये छोटा सा गार्डन भी है, बहुत सुंदर है, बाकी पता नहीं। हेलो। तो ये मैं पहुंच गया अपने लास्ट स्टॉप हॉप ऑन ऑफ का। बस यहाँ पर उतर के मैं अपने मतलब ये एक्चुअली मैं इसका नाम तो भूल गया, कोई बड़ा सर्कल है ये, और बस यहाँ से मेरा लंदन टावर 1 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ से पहिया पहिया निकल जाऊँगा। तो भाई ये पूरा हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का टूर मैंने पूरा कर लिया। बड़ा मज़ा आया, शानदार रहा। और एक दिन में मैंने काफ़ी कुछ यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस थे वो देख लिए। तो अगर आप भी लंदन में हैं तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं।